Nirnay IAS by officers for future officers. The Library of Alexandria. Like I was saying, it used to be the Harvard of its time, and it was destroyed by a mob. It was destroyed by a mob. Weird, right? Why? Because sometimes the mob does not like things which are too intellectual. Anyway, the reason that this is because I was very inspired by the Library of Alexandria idea. Today's session is essentially a tour of the Library of Alexandria, which is to say, this is an intellectual tour of all the themes that you need to know when it comes to essay. What type of essays are asked in the UPSC? Obviously, they are not like the types of essays that Harvard will ask or Stanford will ask, or personal essays hote hain. They will ask you, how do you see yourself 10 years from now? Why should you be a good fit? Blah, blah, blah. Hamare baare mein nahi hote hain. The type of essays that the UPSC asks is essentially and almost always liberal arts minded, humanities focused, broad-based philosophical / abstract essays. This type of essays hote hain. In order to answer them well, we need to know the themes of the liberal arts and of the humanities, but we have no time to become scholars at this. Yes, typically what happens is you are able to write a stellar essay, a beautiful banger of an essay, only when you have consumed so much information that it just pours out of you. That luxury we cannot afford. Also, yes, obviously not. We do not have time to become scholars. And in how many things are we even going to become scholars? The UPSC is not about that, is it? It is about you understanding the patterns and deploying it in some sort of a weird bluffing, strategic way, such that it comes out nicely. It comes out well. It comes out with meaning. It comes out with fluency. It comes out with flow, and it comes out with structure. This is the goal. I am going to teach you precisely that. Today, in today's session, we are going to do precisely that. Okay, so far so good. Let us begin. There will be live games in this session. In this session, I will ask you to do some brainstorming, which you will do in the chat. Not verbally, but in the chat. We may take a break in the middle, we may not. But let us get started right away with the first practical problem. The first practical problem is, in the UPSC essay, when you are given choices, how and which one do you use? Which one do you choose? This was previous year. These are previous year essay topics, section A. Which one will you eliminate? कौन से पे नहीं लिखोगे आप? कौन से पे नहीं लिखोगे आप? You should be able to see my screen very clearly. अच्छा, Vaibhav is eliminating 3. Vaibhav क्यों? 90% लोगों ने वैसे 3 पे ही लिखा था इस बारी. 90%. Almost everybody wrote on this happiness wala topic. You will eliminate 4. 1. Forest precedes civilization and deserts follow them. Would you write on that? 1 पे नहीं लिखोगे. I will write on 4. ठीक है. I will tell you how it is chosen. What about this? This is section B. इसमें कौन सा eliminate करोगे? कौन सा नहीं करना है? कौन सा ऐसा है जो नहीं करना है? कौन सा ऐसा है जो abstract है, difficult है, जिसके बारे में most people will not have enough grounding to write in a way that is outstanding or in a way that will fetch us a lot of marks, at least penalize na ho hum exam mein. This time the essay topics are not so hard. Last time they asked some extremely difficult abstract philosophical topics, one of which was the real is rational and the rational is real. Difficult topic, not easy to do and not for everybody to do, hard. But people wrote about it. Ended up not getting marks. This year people wrote very much on this topic. Most people wrote on the happiness wala topic. Again, not too much avail. कोई फायदा नहीं हुआ उसका, because it turns out that to some extent the UPSC will penalize templatization. बहुत ज्यादा templatization उनको पसंद नहीं है. इस बारी 40 मार्क्स दिए हैं लोगों को उन्होंने ऐसे में. 40 मार्क्स बहुत ज्यादा कम होते हैं. 40 मार्क्स का मतलब there is proper penalization. इसका मतलब कुछ genuine content निकलना चाहिए. Some amount of genuine content has to be outputted if you are going to do this properly. Now, when I teach essay writing, I will take you through certain steps. We will do and actually practice an algorithm. Algorithm is a series of steps, essentially. Whenever you write an answer or you write an essay, you will have some algorithm in your head. I have only formulated it and made it formal so that it becomes easy for you to follow. The first thing we do is we deconstruct the essay topic, and we will do some deconstruction right now. This is what deconstruction is all about. When we are given an essay topic, it will be some sort of a statement which is slightly abstract,
slightly perhaps philosophical, it will have some loaded meaning, it will have some hidden dimensions, it will have some essence that is not obvious. One of those essences is this. Take a look at the fifth question. Social media is triggering fear of missing out amongst the youth, precipitating depression and loneliness. What is the hidden dimension here? Obviously, we don't need to agree with the topic entirely. The whole topic will not be about this and this only. We will have to tell or at least speak to some extent about the benefits of social media. It can't just be one-sided entirely. But this is one of the most straightforward statements you will find. It does not take much imagination to find out any hidden dimension, because there are not a lot of hidden dimensions at all. Nearly all men can stand adversity, but to test character give him power. This is an ancient essay topic. This essay topic has been coming constantly and consistently since years. It is just another version, it's just another play of words on the old adage, which says power corrupts, absolute power corrupts absolutely. This is simple. It is a topic about ethics, it's about values, it is about character, and it is about how humans become their worst when they have power. You need to know what power is. You need to understand how power is different from responsibility. You need to understand how power is leveraged. There are some very interesting things about this stuff that I will tell you as we go further. But predominantly, it is a topic about ethics, and it is a topic about character and values. That much is obvious, right? Take a look at this one now. All ideas having large consequences are always simple. Do you notice a pattern? Do you notice that as soon as the language becomes simpler, the statement becomes shorter, it becomes more abstract, it becomes more convoluted, it becomes a little bit more philosophical, it becomes a little bit more abstract. This one is a little bit more abstract. All ideas having large consequences are always simple. What type of ideas are being spoken about? What type of large ideas are being spoken about? Are they talking about innovations? What all will I have to cover? You see, what all will I have to cover in order to find what I want? This is a hard problem for me to solve because I have no templates to rescue me. मुझे इसके बारे में एक्सटेंसिवली सोचना पड़ेगा अगर मैं इसको अच्छे से डिस्कवर कर सकूं. डिस्कवरी ऑफ न्यू थिंग्स एक आइडिया है. देखो अभिमन्यु, Gopika, that is one idea, but that is not the entire thing it is about, because it will cover bad ideas also, na? It will cover bad ideas also. It will not only be about good ideas. What about the bad ones? And I think it is particularly about the bad ones, if you think about it. Essentially, yes, it is about discoveries. Yes, it is about the apple falling on Newton's head, him discovering gravity, which has wide-ranging consequences. But it is also about that stupid idea of a superior race. It's also about the idea that everybody else is inferior and they should be exterminated. And that idea, that simple, basic idea, a whole country rallied for it. They made a dictator and a despot, one of the most powerful people in the world, who in turn had millions of people killed. Simple ideas ही होते हैं ये सारे के सारे. But इसको मेरा कहने का मतलब ये है, I'm trying to connect it to this problem over here. Choosing well by picking the worst. जहां पर abstraction ज्यादा हो जाती है, वहां पर उसको cover करना और ज्यादा मुश्किल हो जाता है. It is because of the nature of abstraction. This is just something I want to explain to you. समझाने की कोशिश करनी जरूरी है ताकि आपकी choices better हों और आप over confidence में गलत topic ना choose करो. That's number one. Number two, it is in the nature of abstractions that it applies to more number of cases. इसने बोला large ideas. अब large ideas तो हर किसी के हर type के हो सकते हैं. It can be in मैं उसको dimension के हिसाब से analyze करना start कर दूं अगर, I will have large ideas in philosophy, in psychology, in the temporal dimension, in the ethical dimension, in this dimension, in that dimension. There is no end. I may have good ones, I may have bad ones. How will I structure it? This becomes difficult for me. Therefore, I will not choose this as a topic. It becomes harder for me to be comprehensive a little bit. You understand what I'm saying? You get it? I might not be able to find everything that is worth writing here. This makes my life harder, not easier. It might make the statement easy, because here is a trick which I'm trying to explain. Just because it is abstract, just because it is simple, make you feel that you know something about it, but you do not know everything there is to know about it. Whereas, in contrast with the
First, the essay topic number 5. There is no ambiguity in this. Social media is triggering fear of missing out among the youth, precipitating depression and loneliness. इसने खुद ही बता दिया है क्या कॉज है और क्या इफेक्ट है. मैं इसको डिबेट कर सकता हूं, मैं इसके प्रोज एंड कॉन्स बता सकता हूं, मैं सोशल मीडिया के, बट मुझे पता है मेरा दायरा इसने फिक्स कर दिया टू अ लार्ज एक्सटेंट. It has already given me a certain constraints. The shorter the topics, typically the more abstract the topic, not necessarily complex, abstract. It is the case with abstractions that it applies to many more peculiarities in the world. Particular चीजें, एक बड़ी abstraction बहुत सारी particular चीजों को apply करती है. बस ये basic concept आपको समझ में आ गया. ये this will slightly to whatever little extent inform your choices and also inform our approach going further. Yes. Now we come to real deconstruction. हमने देखा ऐसे टॉपिक होगा, ऐसे टॉपिक में कुछ एब्स्ट्रैक्शन होगी, एब्स्ट्रैक्शन को अनपैक करना पड़ेगा. जैसे ये कैमरा है, इस कैमरा के अंदर बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं. ईच ऑफ दीज कंपोनेंट्स आर प्लेस्ड इन अ सर्टेन वे टू मेक द होल थिंग वर्क वेल. इफ आई डू नॉट अंडरस्टैंड व्हाट इट इज मेड अप ऑफ, आई कैनॉट डू जस्टिस टू इट. दिस इज माय बेसिक प्रेमिस, दिस इज माय बेसिक assumption. Is that okay? Is that agreed to? Is that agreeable to you? I need to understand the entire essay topic and I need to be able to unravel it before I can unravel it on paper. Before I can unravel it on paper and pen, because with paper and pen, I cannot go back. I can't go back. I have to go fast. I have to go in a sequence. I need to do my rough work before I start writing. My thought process has to be clear. मैं क्या बोल रहा हूँ, कितने पैराग्राफ में कैसे बोल रहा हूँ, मेरा फ्रेमवर्क क्या है, मेरा स्ट्रक्चर क्या है और मेरे उसके अंदर के पॉइंट्स क्या हैं, मेरे आर्ग्यूमेंट्स क्या हैं, मेरे एग्जांपल्स क्या हैं. ये जब मेरे पास होगा तो मैं एक बारी में उसको लिख पाऊंगा, खासकर टाइम कंस्ट्रेंट में. ये चीज हमें सीखनी. दिस इज deconstruction. Here is the first deconstruction that you will do, and here is the question, the fundamental question. Deconstruction का basic assumption है हर एक ऐसे टॉपिक मोस्टली दो चीजों से बना होगा. चीजें, थिंग्स. I call them thing 1 and thing 2. I'm literally calling them things. I am not calling them concepts. I am not calling them pros and cons. हम बिल्कुल बेसिक फंडामेंटल टाइप की लैंग्वेज यूज करके इसको समझने की कोशिश करते हैं. मैं बोल रहा हूं हर एक ऐसे टॉपिक एसेंशियली 2 या 3, ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 कॉन्सेप्ट्स या टॉपिक्स के बारे में होगा, या उनके बारे में कोई कंपैरिजन होगा, या उसके बारे में एक रिलेशनशिप डिस्क्राइब होगा. वो हम धीरे धीरे अनपैक करेंगे. जब हम ऐसे का टॉपिक देखते हैं, हम चूज कर चुके हैं, हमने चॉइस ले ली, हमको चॉइस के बारे में कुछ थोड़ा सा आइडिया लगे कि हमको कैसे नहीं चूज करना. अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा. हमने सपोज करो एक टॉपिक चूज कर लिया है. हमारा टॉपिक है, सपोज करते हैं, लेट अस अज्यूम, कौन सा टॉपिक हो गया, द डाउटर इज अ ट्रू मैन ऑफ साइंस लेते हैं. चलो, द डाउटर इज अ ट्रू मैन ऑफ साइंस. वी टेक दैट टॉपिक. मैंने आपको कहा कि deconstruction is essentially that the essay topic will be about 2 things. It will be about 2 concepts or 2 things. What are the 2 things in this? What is thing 1? What is thing 2? The doubter is a true man of science. What is thing 1? What is thing 2? I'll give you an example. The example is a very simple example that helps you understand. Suppose ये है topic. Capitalism cannot coexist with inclusive growth. इसमें what is thing 1? What is thing 2? You are right. The siblings way, you are right. And charisma is also right. Weber is also right. But let me just explain so that everybody is on the same page. Capitalism cannot coexist with inclusive growth. Forget the topic. When we are doing deconstruction, we ignore the language of the sentence. We ignore the topic. We focus on the things it is made up of. I want to go one level inside to understand मुझे करना क्या है. Exactly correct. Exactly correct. अनुष्का, very good. वर्णिका, रविंद्र, कृणाल, perfect. शिवांगी, perfect. ये आ गया समझ में हमको. This is clear. Just in case it is not clear, एक और टॉपिक कर लेते हैं. Just for the heck of it, automation can never replace manpower. Technology cannot replace manpower. Previous year question है दोनों, but कोई बात नहीं. Just automation, manpower. Perfect. अब UPSC will do one layer of abstraction above this. इसके ऊपर एक लेयर होगी. एक चीज thing 1, thing 2 में से एक चीज क्लियर होगी, दूसरी चीज थोड़ी सी क्लियर नहीं होगी. इन मेनी ऐसे टॉपिक्स वो हमको अनपैक करनी होगी. हमको पहले आइडेंटिफाई करना होगा व्हाट आर द 2 थिंग्स. ये फर्स्ट स्टेप है हमारा. दिस इज द इनिशियल fundamental primordial step. This is what I'm trying to teach over here in this exercise.
I will try to understand and deconstruct what are the two things, क्योंकि अगर मैंने उनको ठीक से articulate कर दिया, मेरा ऐसे most likely ठीक flow करेगा हर जगह में ही। क्योंकि आप एक चीज हमेशा याद रखना, it will be enormously difficult to write an essay about three things. ऐसा होता नहीं है, लिखा नहीं जाता है वो, आप कंपेयर नहीं कर पाओगे तीन चीजों को, आप हमेशा दो चीजों के साथ घूमोगे, pros and cons, positive, negative, good, bad, जो भी आप करोगे, and I will give you some frameworks, but you will have to boil them down essentially to two essential things, and you will find that most of these questions, most of these topics, if not all, are deconstructible into one or two things. Let us go and see what the deconstruction is for each of these. Let us start with this one. Forests precede civilization and deserts follow them. तीन कीवर्ड है, तीन कीवर्ड लग रहे हैं, बट चीजें दो ही हैं, कॉन्सेप्ट दो ही हैं. What are the two concepts? What is thing one, thing two in essay topic number 1? Forests precede civilization and deserts follow them. What is thing one, thing two? Forest, civilization, desert, ठीक है, नहीं, बट exactly कैसे करोगे? Forests precede civilization, deserts follow them. What is thing one? What is thing two? अब मेरे को अच्छे से articulate करके बताओ. What is thing one? What is thing two? Forest and desert नहीं, but what about civilization? Civilization नहीं है क्या इसके अंदर? नहीं पे. Forest, civilization, desert, desert is human and nature is one centered. Yes, yes, you are right, Anushka, you are getting close. But इसको अच्छे से articulate करना बहुत बहुत जरूरी है. Afforestation, deforestation के बारे में नहीं है. It is more than that, Nikita. It is broader than that. Although that will definitely appear in the essay, but it's not only about that. Environment and civilization, ठीक है. Civilization and yes, environment and civilization is the correct articulation. बिल्कुल ठीक. किसने बोला ये? याशिका ने. Marjorie Sai Chaitanya ne also, you also said the exact correct thing, perfectly articulated. This is precisely correct. Precisely correct. ये ऐसे टॉपिक, एनवायरमेंट एंड सिविलाइजेशन, नेहा बिल्कुल ठीक, बसवराज बिल्कुल ठीक. Many people did not get it completely accurately, but you got the gist. आप समझ गए थे, आपने वो वर्ड्स शायद चूज नहीं करे जो जैसे पलक ने कर लिए, which Nagendra do, but आप समझ गए मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ. You have understood? Once I have environment and civilization, then I will go and discuss. I can now deconstruct between environment and civilization. क्या है relationship? The environment and nature oblique environment, call it what you want, has been there all along. Civilizations are new entrants into the lap of nature. Humans have existed for a very short time. Nature and life has existed for billions of years. It does not care whether humans live or die. But there is an abusive type of relationship that civilizations tend to have with nature. Humans tend to consume nature at a speed at which it is unsustainable, which is why we have all these issues, which is why we keep trying to mitigate and we keep trying to balance, which is why we keep on saying inclusive growth karo, sustainable development karo, क्योंकि sustainability is the basic question. इसमें ये सारे themes आ जाएंगे, but at least मैंने articulate ठीक कर दी अपनी problem, big problem solved, मैंने deconstruct ठीक कर दिया इसको. दूसरा वाला deconstruct करें. Should we find the second one? Let us see if you are able to deconstruct topic number 2. What are the two broad concepts that are being spoken about? The empires of the future will be the empires of the mind. Tricky है, this one is not easy. इतना आसान नहीं है, but आप articulate कैसे करोगे इसको? Future and mind. इसमें अनुष्का problem ये है ना, future and mind में technology कहीं नहीं आ रही है. Although you might argue that it is somewhere fitting inside future, perhaps not. But how will you articulate this? What are the two concepts that are being spoken about? Power, बिल्कुल ठीक है. Power, I completely agree with. Power is definitely one of the core themes in this. Power and mind, आपने बोला बहुत सही है, बहुत close है. Future and technology, very close. अब थोड़ा सा हिला हुआ है. Future and mind is close but not correct. आप ध्यान से देखो ऐसे टॉपिक को, ध्यान से देखो, आइसोलेट करो, इसकी लैंग्वेज को इग्नोर करो, इसकी लैंग्वेज के ऊपर बढ़ो, इसके जस्ट लुक बीनीथ द सरफेस, ये क्या बोल रहा है. माइंड, पावर एंड फ्यूचर टेक्नोलॉजी. फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर एंड पावर, ये है एग्जैक्ट. करिश्मा, यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट, यू गॉट इट. दिस वन वाज नॉट इजी. फ्यूचर एंड पावर, आशिका परफेक्ट, दैट्स करेक्ट. भूमिका परफेक्ट, यू अंडरस्टूड. यूथ पावर नॉट नेसेसरी, फ्यूचर एंड पावर इज करेक्ट. बिल्कुल ठीक है नागेंद्र.
फ्यूचर एंड पावर अभिमन्यु। ये है यूपीएससी में डिफिकल्टी। इस स्टेज पे 90% लोग यहीं पे रुक जाते हैं। आप बिल्कुल सही समझे हो, जितने लोग समझे हैं मैं थोड़ा सा समझा देता हूं। आप देखो क्या बोल रहा है ये, द एम्पायर ऑफ द फ्यूचर विल बी द एम्पायर ऑफ द माइंड। व्हाट इज एन एम्पायर? एम्पायर इज बेसिकली नथिंग बट अ पावर विल्डिंग स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी। एक देश होता है जिसके पास पावर होती है, वही बोलता है ना एम्पायर। आते हैं जाते हैं, अमेरिका इज एन एम्पायर, इंडिया इज ऑल्सो एन एम्पायर एक्सेट्रा। तो बेसिकली पावर, जियो पॉलिटिकल पावर कैसे बदल रही है टेक्नोलॉजी की वजह से, ये बोल रहा है। और ये एक असर्शन कर रहा है, इट इज असर्टिंग समथिंग अबाउट हाउ इट इज चेंजिंग बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी, and because of technology how now it is being leveraged into the mind sphere much more than it was. So what it is saying is, now instead of the cavalry, instead of the guns, instead of the artillery, it is about the narrative warfare. The battle is fought in the algorithm, the battle is fought in tech, the battle is fought in AI. The battle is not necessarily fought in the battlefield anymore. If we have seen anything in Operation Sindoor, is it not that it was as much a narrative warfare as it was actual battle? सोल्जर्स तो थे ही नहीं इन्वॉल्व उसके अंदर। इट वॉज टेक्नोलॉजी फाइटिंग इटसेल्फ। एक हमारी टेक्नोलॉजी उनकी टेक्नोलॉजी से लड़ रही थी, और हमारा नैरेटिव वॉरफेयर उनके नैरेटिव वॉरफेयर को कॉम्बैट कर रहा था। यही हो रहा था। टेक्नोलॉजीज वर फाइटिंग एंड बोथ पार्टीज वर ट्राइंग टू बिल्ड अ नैरेटिव। दिस इज बेसिकली व्हाट हैपेंड फॉर 6 days, 5-6 दिन जितना भी वो चला। ये बोल रहा है, दिस इज व्हाट दिस ऐसे टॉपिक इज सेइंग। आप समझो इस चीज को, ये सटल चीज है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। ये चीज सिखानी बहुत मुश्किल है, पर एग्जाम्पल्स के थ्रू टू सम एक्सटेंट एटलीस्ट आपको ये समझ में आ जाएगा कि इस टाइप के एब्स्ट्रैक्ट स्टेटमेंट के अंदर घुस के निकालना क्या है मुझे। स्टार्टिंग में अगर मैंने डीकंस्ट्रक्ट ठीक किया है तो मेरा सारा ऐसे ठीक फ्लो करेगा, इसका मतलब आपको ऐसे आ गया समझ। और अगर ये नहीं हुआ तो ऐसे नहीं आया है समझ। यस इट इज हार्ड, एग्जैक्टली यही तो बात है, यही सीखना हमको है। ये हार्ड है, ये बिल्कुल आसान नहीं है। आसान थोड़ी करेंगे ये लोग, आसान नहीं करेंगे। इसीलिए तो क्यों आपको लगता है, बताओ 250 में से 100 क्यों आते हैं लोगों के? इसीलिए तो आते हैं। इट इज नॉट इजी। हम कुछ ना कुछ तो लिख ही देंगे, हम कुछ ना कुछ तो लिख ही देंगे, बट क्या वो लिखेंगे जो ये बोल रहा है? इसको समझना जरूरी है। प्रैक्टिस से होगा। दैट इज व्हाट आई एम हियर टू डू, दैट इज व्हाट आई एम हियर टू टीच। यही तो समझने की कोशिश कर रहे हैं हम। अभी तो हम कंटेंट में घुसे नहीं है। जब हम घुसेंगे तो ये सारे थीम्स निकल के आएंगे एक एक करके। सो फार सो गुड। अभी तक आप समझ रहे हो कि मैं क्या बोल रहा हूं? You have to go beneath the topic also. You have to extract what is this, and that is when good real deconstruction happens. हाँ, नहीं, you will get this. ये आप you will be pros at this. ऐसे टॉपिक देख के आपको समझ में आएगा कि अच्छा ये है। क्योंकि देखो थीम्स जो है ना, थीम्स हैं बहुत कम। ऐसे में थीम्स हैं बहुत कम। 6 डायमेंशन है, उस सारे के सारे डायमेंशन मेरी इस क्लास में हैं। उन सारे डायमेंशन में से ही ऐसे आएगा। आप स्टेटमेंट अलग अलग चेंज हो के आएगी। आपको ये समझना चाहिए कि कौन से थीम्स की बात हो रही है। अगर आप थीम्स पकड़ लोगे ऐसे आ जाएगा समझ में आपको। एक और लेते हैं, ये रिलेटिवली सिंपल है बट नॉट एग्जैक्टली सिंपल। देयर इज नो पाथ टू हैप्पीनेस, हैप्पीनेस इज द पाथ। डीकंस्ट्रक्ट, प्लीज डीकंस्ट्रक्ट दिस और मुझे बताओ क्या हो रहा है इसके अंदर। देयर इज नो पाथ टू हैप्पीनेस, हैप्पीनेस इज द पाथ। क्या है? थिंग 1 थिंग 2 क्या है? हार्ड बट इंटरेस्टिंग, एब्सोल्युटली एग्रीड, दैट इज व्हाई आई लाइक टीचिंग इट। हैप्पीनेस एंड सक्सेस नहीं पीयूषा, सक्सेस के बारे में नहीं है, क्योंकि सक्सेस का बाय डेफिनेशन हैप्पीनेस के साथ कोई पक्का कोरिलेशन नहीं है। गोल एंड हैप्पीनेस ट्रिकी, थोड़ा सा ट्रिकी है और 2-3 तरीके हैं। देयर आर 2 or 3 ways to articulate it. Let me see how you articulate it. I am reading everything you are writing. Way of happiness, close. बट आप अच्छे से आर्टिकुलेट करो इसको। आप डिकंस्ट्रक्ट कर दोगे तो काम हो जाएगा आपका। वेरी क्लोज अंशुल, क्लोज। पाथ एंड सेटिस्फैक्शन ऑल्सो क्लोज। यस मुस्कान, that's the one right there. Yes, she got it. That was the word in my head also. Happiness and destination. There is a mention here about a destination. Is happiness the destination or is it the path to the destination is the topic that is being spoken, but absolutely correct. Destination की बात हो रही है और कोई गारंटी नहीं है कि happiness वहां पर happiness is the destination.
मे बी एनलाइटनमेंट इज अ डेस्टिनेशन, मे बी मटीरियल सक्सेस इज अ डेस्टिनेशन। क्वेश्चन बोल रहा है हैप्पीनेस और डेस्टिनेशन का रिलेशनशिप क्या है, आप मेरे को ये बताओ। बट आपने आर्टिकुलेट बिल्कुल ठीक करा इसको, डिकंस्ट्रक्ट आपने इसको बिल्कुल ठीक किया है, यही है। अब हम डिस्कस कर सकते हैं कि इसके बीच में सक्सेस कहां पे मिलती है नहीं मिलती है। We can then discuss about various other things. We can go into the definition of happiness. We can go into the definition of destination. क्या मोक्ष डेस्टिनेशन है? क्या is there anything else beyond it? Is there any point to this thought? And if happiness is the destination, then why should I not go into hedonism? मैं फिर सीधा प्लेजर को सीख कर लेता हूँ ना एकदम से। I will just go directly to the happiness. अगर बोलते हो हैप्पीनेस की डेफिनेशन वहां पर काम आएगी, डेस्टिनेशन की मतलब वहां पर काम आएगी हमको, एंड दैट विल गिव अस अ हायर मीनिंग। वहां पर हम बुद्धा को यूज करेंगे, स्पिरिचुअलिटी को यूज करेंगे, एथिक्स को यूज करेंगे, वैल्यूज को यूज करेंगे, जो कुछ भी यूज करेंगे। पॉइंट ये है बेसिक लेवल पे समझ में आया या नहीं आया ऐसे टॉपिक? सो फार सो गुड, यू आर विद मी? दिस इज नॉट इजी स्टफ बट इट इज वेरी इंटरेस्टिंग। और ये मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था ना, दिस इज व्हाट आई वाज ट्राइंग टू टेल यू, ये है लाइब्रेरी ऑफ अलेक्जेंड्रिया। यहां पर आपका दिमाग खोला जाएगा, योर माइंड विल बी ओपन्ड, ऐसे करके खोल दिया जाएगा आपका दिमाग, और वो खुलेगा। और ये यूपीएससी चाहता है, बट हमारे पास इतने साल नहीं है कि हम 50 किताबें पढ़ के उस लेवल पे पहुंचे। आई हैव कंज्यूम्ड दिस इंफॉर्मेशन, आई हैव टू ट्रांसफर, एंड बाय एंगेजिंग विद यू लाइक दिस आई विल ट्रांसफर, बट इट कैनॉट हैपन अनलेस यू बिकम अ लिटिल बिट अनकंफर्टेबल। इसीलिए मैं आपसे ये डिफिकल्ट और अनकंफर्टेबल सवाल लगातार पूछता रहूंगा। दिस इज हाउ आई टीच दिस कोर्स, दिस इज द ओनली वे योर माइंड विल फिगर इट आउट। दिस इज व्हाट यू नीड टू बी टॉट, दिस इज व्हाट द यूपीएससी वांट्स। अभी Zainab, it's all right if you cannot understand clearly, it is not so clear, is it? It is a little bit muddied, it is very much this way. ये टॉपिक, क्या आपको लगता है हैप्पीनेस और डेस्टिनेशन किसी को समझ में आया आज तक? Is there anybody who has understood this in a proper normal mathematical logical way? नहीं आया भाई किसी को समझ में। 90% चीजें ओपन एंडेड है, तभी तो ऐसे पूछ रहे हैं वो इस पे। बट क्या हम लिख सकते हैं उस पे? हाँ, हम लिखने लायक हो जाएंगे, हम लिखने लायक हो जाएंगे अगर हमें समझ में ठीक से आ गया हो तो। यू गॉट इट, यस, बट दैट इज नॉट अ लाई, यू आर राइट अबाउट दैट। दे वांट अ सर्टेन लेवल ऑफ हायर थिंकिंग पावर, व्हिच इज व्हाई यूपीएससी वो मजाक थोड़ी, डिफिकल्टी है। इतना वो नहीं होगा, 2 + 2 4 थोड़ी पूछेंगे वो लोग। वो सीधा हैप्पीनेस और स्पिरिचुअलिटी और डेस्टिनेशन के बारे में आपसे रिलेशनशिप का क्वेश्चन पूछेंगे। इसलिए लोगों के 40 नंबर आए थे इसमें। इसमें कोई एम्बिग्विटी थोड़ी है। वी ऑल नो हैप्पीनेस क्या होता है, वी ऑल नो हैप्पीनेस इज द पाथ, इट इज नॉट द डेस्टिनेशन। बट क्यों आए 40 नंबर लोगों के? क्यों? सबने पेस्टल एनालिसिस कर दी वहां पे जाके, हर किसी ने उसको डायमेंशन में तोड़ दिया और किसी को कुछ नहीं मिला उसको करके। ये समझ गया, yes, it is not easy to understand, but this is precisely what we have to do. This is precisely what we are here to learn. Then we will do multiple conversations on this. अभी तो स्टार्ट है, तो अभी आप ट्रेलर देख रहे हो, अभी हम इसके डेप्थ में घुसे कहाँ हैं। लास्ट क्वेश्चन, we will deconstruct. We have already actually deconstructed this. The doubter is a true man of science, हम deconstruct कर चुके हैं। अच्छा, अब now we will go to stage number 2. आपको समझ में आया डिकंस्ट्रक्शन में क्या होता है, आपको समझ में आया कि उसका चैलेंज क्या है। You have understood to some extent that there is a certain level, there is a layer which is uncovered, और उसके बाद थोड़ा सा वर्ड्स को शिफ्ट करके थोड़ा सा घुमा फिरा के एक फिट सा बैठता है कुछ, फिर आपको लगता है कि अच्छा ये है, दिस इज इट एंड दिस इज इट, दिस इज व्हाट इट इज अबाउट। नाउ हियर इज व्हाट यू आर गोइंग टू डू, you are going to take a piece of paper, which I will also take, actually I will also do this exercise with you. ये मेरे पास नोटबुक है, I will fold this page midway like so. I will fold it midway so that I create a barrier in the middle of it. I will write here thing 1, I will write here thing 2, like so. Thing 1, thing 2. Yep. So far so good. Yes. Which essay topic do you want to take? I will take the one you want. कोई भी essay topic आप ले लो,
ये फॉर्मूला यूज करके पहुंच जाएंगे हम जहां पे हमको पहुंचना है। हैप्पीनेस वाला नहीं लेंगे, बहुत बोरिंग है यार, हर साल आता है, कुछ नहीं निकलता उससे। हैप्पीनेस वाला नहीं लेंगे, कुछ और लेंगे, लोग ऑलरेडी मार खा चुके हैं उस पर। कुछ डिफिकल्ट आएगा, कुछ डिफरेंट आएगा, कुछ क्रिटिकल थिंकिंग बेस्ड आएगा। सोशल मीडिया वाला वो दैट माइट बी अ लिटिल बिट टू सिंपल। यू वांट 5, व्हाट इज फिफ्थ, व्हाट इज द फिफ्थ वन, कौन सा है? सोशल मीडिया, यू वांट 5 4। अब ऐसे तो बहुत सारे ओपिनियंस हैं। द डाउटर इज अ ट्रू मैन ऑफ साइंस ले सकते हैं, वी कैन टेक दिस, जनरल है। साइंस की सारी डोमेन, 2 डोमेन्स कवर कर लेगा हमारे एक झटके में। वन साइंटिफिक डोमेन एंड क्रिटिकल थिंकिंग, अ लिटिल बिट ऑफ साइकोलॉजी आल्सो इट विल कवर, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं कॉग्निटिव बायसेस वगैरह भी कवर हो जाएंगे। बाय डिफॉल्ट इट विल कवर, बिकॉज इट इज अबाउट साइंस, इट विल कवर टेक्नोलॉजी टू सम एक्सटेंट। फ्यूचर एंड पावर इज आल्सो वेरी इंटरेस्टिंग, बट फ्यूचर एंड पावर वाला जो ऐसे टॉपिक है, empires of the future will be empires of the mind, I covered this in the live class I took on last Sunday. So that I think will be uploaded or may have already been uploaded on YouTube, that you can go and check. Extensively it was done. This one was not done. This one is new. The doubter is a true man of science. What is thing one? What is thing two? The doubter is a true man of science. ये करते हैं, बहुत कुछ निकलेगा इसमें से once we start unpacking it. The doubter is a true man of science. We will not go, we will go into this for another 15 minutes or so. We will unpack it, then we will move to other exercises. बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे कुछ cheat codes भी आपको मैं दूंगा. Poverty everywhere is a threat to prosperity everywhere. We go ahead and we can deconstruct this. इसी टाइप से होगा। पिछले साल का है वैसे टॉपिक, स्केप्टिसिज्म एंड साइंस। डाउट ही बोल रहे ना, डाउट और साइंस है, सिंपल है। इसका इस 2 चीजों के बारे में है, डाउट और साइंस, क्या रिलेशनशिप है इसके बीच में? What is the relationship between science and doubt essentially? This is what it boils down to, right? So far so good. Any problems? You agree with this? Curiosity नहीं, curiosity अलग चीज हो जाती है। Curiosity और doubt दोनों अलग चीजें हैं। Curiosity is critical for science. In fact, the starting stage of anything scientific is curiosity. And agreed. But there is something more. You know, there was an essay topic last year, 2 essay topic थे इस टाइप के थीम पे। एक ऐसा टॉपिक था, थिंकिंग इज लाइक अ स्पोर्ट एंड इन ऑर्डर टू प्ले इट यू नीड 2 साइड्स। एक ऐसा टॉपिक ये था, एक ऐसा टॉपिक था कि इसी टाइप का कुछ ऐसा टॉपिक था। आई थिंक इट वाज अबाउट क्रिटिकल थिंकिंग और समथिंग। क्वेश्चनिंग, डाउट एंड साइंस सिंपल है, इसमें इसके डिकंस्ट्रक्शन डिफिकल्ट नहीं है। एक कॉन्सेप्ट है डाउट, एक कॉन्सेप्ट है साइंस जिसकी ये बात कर रहा है। ये साइंटिफिक थिंकिंग की बात नहीं कर रहा है, ये साइंस की बात हो रही है। साइंटिफिक थिंकिंग विल come. I'll teach you the concept, I'll teach you how to deconstruct, but so far we are okay with it. Thing 1 is doubt, thing 2 is science. So far so good. I have written it, आप भी लिख लो, क्योंकि इस पे हम अभी ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे। अब मेरा नेक्स्ट चैलेंज ये है, मैंने अगर इस टाइप का टॉपिक चूज कर लिया है, I need to be able to generate content. I need to be able to generate content for this. I need some ideas for this. I need to make sure I do not miss out anything critical, and I have more than enough so that I can structure it accordingly so that the content at the end of it is comprehensive, at least comprehensive enough. How do I make sure I do that? The technique that is used to do that is called structured brainstorming. That is the technique I will use to do that. What is structured brainstorming? Structured brainstorming is very interesting. On one side, I have written doubt. On the other side, I have written science. I want you to focus only on one word. We have isolated a word. That is what we were doing in deconstruction. We were isolating the critical words that encapsulate the concept. The critical word here is doubt. Now, my question to you is, what comes to your mind when you think of the word doubt? Forget the essay topic, forget UPSC, forget science. When you think of the word doubt, what comes to your mind? Yes, write these down. Rational thinking, questioning, doubt. Doubt to chalo hai hi. Truck, I don't know how that will fit. What else? What else comes to your mind? Go beyond it.
I want you to use your semantic network. जब डाउट वर्ड की बात हो रही है, मैं ऐसे टॉपिक की बात नहीं कर रहा, जाने दो ऐसे टॉपिक को, गायब हो जाने दो. All the keywords that come to your mind when you think of doubt, all the keywords that come to your mind, I want those. Innovation ठीक है, we can do that. I'll tell you why. Why तो ठीक है, why ठीक है, go deeper. You R&D ठीक है, I will write R&D, मैं लिख दूंगा. आप अभी भी ना आपके थॉट में एंकरिंग बायस बहुत है. एंकरिंग बायस होता है कि क्योंकि मैंने आपको पहले ही ऐसे टॉपिक बता दिया है, आप उसको सिर्फ यू आर ओनली थिंकिंग अबाउट इट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द ऐसे टॉपिक, आप बाहर आओ उससे. मैं आपसे पूछ रहा हूं, डाउट एक नॉर्मल इंग्लिश का शब्द है, आपने किस किस कॉन्टेक्स्ट में वो सुना है? आई एम ट्राइंग टू एक्सट्रैक्ट द कॉन्टेंट ऑफ दिस ऐसे टॉपिक फ्रॉम इनसाइड यू. It is already there, but I need a technique to extract it, and that is this technique. Clarity, decisions, suspiciousness. Okay. और अच्छा, are you ready for a cheat code? अब ठीक है, ये आपके वो हैं. These are your inputs. आपने बोल दिया dilemma, ठीक है, dilemma is a decent one actually. Dilemma I will write. Fear, suspicion, ठीक है. अभी भी बहुत generic से हैं. Are you ready for a cheat code? Are you ready for a cheat code? Here it is. You will ask 12 questions. You will ask 12 questions for that keyword. आपको, are you able to read this? Are you able to read this? I will go question by question and we will brainstorm. If you are not able to read it, no problem, because I have it here also. How about now? अब आप पढ़ पा रहे हो? Yes, okay. Where have you heard or read about doubt before? Where have you heard or read about doubt before? Where have you read or heard about doubt before? Go to your optional subject. Go to anything. Go to misinformation. Go to your thoughts about AI, fake AI. Go wherever you need to go. Lecture नहीं, but what about some specific keywords I want? Keywords चाहिए. Deep fake, ठीक है? Deep fake लिख लेते हैं. Deep fake लिख लेते हैं. Critical thinking तो लिख ही लेते हैं. Religious beliefs definitely लिखूंगा मैं. Definitely. God, customs, ये सारे keywords आप लिखो भी काम आएंगे हमारे ये. And I will show you कहाँ कैसे काम आएंगे. RTI, not bad, interesting. Business decisions, MCQs, okay. Internet rules, okay. ठीक है. What is the importance of doubt for human beings? What is the importance of doubt for human beings? Myths, बहुत अच्छा word है. I will write that. What is the doubt? What is the significance of doubt for human beings? What are the words that come to your head when you hear that question? Evolution, vocation, existence, existential questions, innovations. Okay, write these. Objectivity, knowledge. What about democracy? What about debate? Are those not relevant? Yes. Problem solving, yes. Pluralism, sure, absolutely. Write that. That's a good word. ये हमको अनेकांतवाद से भी कहीं ना कहीं जोड़ देगा. ऐसे में अच्छे आइडियाज हैं ये. These are decent ideas. तीसरा सवाल पूछते हैं आपसे. Is it made up of smaller words? What do they mean? No, in this case it is not made of smaller words. Sometimes our keyword like inclusive growth is made of smaller words. This comes to the rescue. Question number 4. What is the opposite of doubt? What is the opposite of doubt? Truth. ये आप वर्ड लिख लो. Truth. Faith एक वर्ड आएगा आपके मन में. इंपॉर्टेंट वर्ड है ये इस टॉपिक के लिए. Faith. और सोचो. अलग सोचो, सिर्फ ये नहीं. Go divergent. We are doing divergent thinking right now. Divergent thinking की exercise है ये. In fact, a very good example of that is what we are doing here. Solution, fact.
evidence, okay, confidence. All right, I'll take that. Okay. Another question. What do you already know about doubt? Nothing very, okay, it's fine. I can skip. Fifth question मुझे बहुत ज्यादा हेल्प नहीं करता क्योंकि मैंने कवर कर लिया है वो. Sixth question कैसा है मेरे लिए? Is there an ethical question or debate associated with doubt? What could it be? अब बताओ मेरे को, इसके बारे में आप सोच के बताओ और अच्छी बात बताना. Give me something good. What is the ethical debate? यूथेनेशिया, ठीक है, यूथेनेशिया इज अ डिबेट, बट टेक्नोलॉजी की कितनी सारी डिबेट्स हैं, इतना सारा. अभी हमने फेक नैरेटिव की बात करी, नैरेटिव वॉरफेयर की बात करी. कितना इंपॉर्टेंट है फेक न्यूज, वर्ड क्यों नहीं आ रहा है? ये आइडिया निकलने चाहिए हमारे अंदर से. यस, एआई, डीप फेक, पॉइंट ऑफ व्यू, फेक एजेंडा, एथिकल डिबेट क्या है इसके अंदर? गुड. यस, जेनेटिक क्लोनिंग, एब्सोल्युटली, व्हाई नॉट? This is particular. अब साइंस अपने आप, बायो वेपन्स, श्योर, ओके, स्कैम, यस, साइबर, एग्जैक्टली, गुड. ये दिस इज व्हाट विल मेक आवर एसेस ग्राउंडेड इन द peculiarities of the world. सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट नहीं निकलेगा. अब ये आप नोट करो, साइबर अटैक्स, ऑल दिस will help us. Exactly. Yes. Now you're getting into the peculiarities. You see, उनका एक एब्स्ट्रैक्ट ऐसे टॉपिक मुझे अपने दुनिया की रियलिटी में ग्राउंड भी तो करना है ना. मुझे कहीं ना कहीं एग्जांपल्स भी तो मैं दूंगा. मैं सिर्फ फिलोसॉफिकल बातें थोड़ी लिख कर आऊंगा. I have to ground it in reality. उनका तो हो गया एक ऐसे टॉपिक देके, but I will have to talk about what it means. It is doubt, where it comes to my rescue, and I will be able to use it. All right. Another question for you. What is the pessimistic or negative side of the word? Can you use the word in a sentence to express something negative or depressing? Can you use this? Can you use it in a way where doubt is not positive, where doubt is negative? Are you able to use it in a way that is such as that? Why do you not? A word was used. जब हम स्टार्ट कर रहे थे तो एक वर्ड यूज हुआ था, स्केप्टिसिज्म. एक वर्ड यूज होता है, नाइलिज्म. हो सकता है आपको ना पता हो वो शब्द, बट काम की चीज है अगर पता है तो. एंजाइटी, dissonance, very good word, write that. Paralysis, good. Superstition, when doubt goes wrong, ये सवाल यही पूछ रहा है ना. This is what this question is asking. When doubt goes wrong, what do you get? Essentially, this is what the question is saying. Orthodox, okay. Inhibits growth. Fixedness, yes, okay. Another question for you. What happened in the past? That is a good example of this. What happened in the past? That is a good example of this. Let us see. थोड़ा सा आपकी बेसिक हिस्ट्री की वो देख लेते हैं. क्या है बताओ पास्ट में? That will be a good example of this. बहुत काम आएगा हमारे. What happened in the past? That is a good example of this. अच्छे. I need some good ones. Newton's law. Okay, good. Gravity, Renaissance, perfect. Yes, that's what I need. It will help me over here because this is the beginning of the scientific method. This is the beginning of that method of doubt which was evolved, which was designed as a means to defeat the superstitious stranglehold of the church. This is where it all started, the Industrial Revolution. Yes, precisely. Voting rights for women also. Women franchise. Perfect. Yes. Aryan invasion, all right. Although the origins and the exact mechanisms are debated, but no problem. Fine. Okay. Now you're getting good content over there. Okay. This is good content. अब अच्छा कंटेंट आ रहा है. अब हमारे पास कुछ कंटेंट आ गया है. अगर हम इसमें 12 सवाल हैं. There are 12 questions. I keep asking questions. Output keeps coming. All I was doing is I took one word, I isolated the essay topic, I took the isolated word of it, and I started to ask these 12 questions about it. And out comes this content, which was not coming before. You remember, Abhi, just 5 minutes ago, when I had asked you about doubt, ये content नहीं आ रहा था बाहर. This was not coming. जो ideas अब आ रहे हैं, they were not coming, were they?
completely different nature of ideas is now coming. This is what will enrich my essay. This is what I will use in my arguments. I don't need to do any extreme amount of academic research for this. मुझे जरूरत नहीं है पढ़ने की कोई debate या कोई ancient essay about how the doubt and how doubt is, the scientific method, blah blah blah. I should be able to extract more than enough confirmation from here, right? It's coming. No, you don't need a PDF. You have it in the book. This is in the cheat book. This is in the cheat book. This is structured brainstorming. We practice this. एग्जाम में बहुत ज्यादा नहीं कर पाएंगे हम ये, पर एक लेवल पर हो पाएगी और आपको उसकी आदत पड़ जाएगी. दिस इज हाउ, मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था हमारे पास नहीं है टाइम, हम स्कॉलर्स नहीं बन सकते. वी कैन नॉट बिकम स्कॉलर्स. वी नीड अ वे टू बी एबल टू हैक थ्रू द प्रोसेस, नो, टू गेट फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी फास्ट. अब आई एम नॉट अ person who has read too much, supposing about the scientific method and how doubt comes. I don't know about Descartes, I don't know about cogito ergo sum, although that is literally the crucifix of this idea, where this idea is born from. But forget about that. Even if I do not know, I have not read, where will I find the content? I will find the content if I isolate correctly and I ask these 12 questions. It will be more than enough. I have populated my sheet, half of my sheet, with your keywords. Govind, if the words are not coming, this is the reason that this cheat code is there. Ask these questions, they will come. Maybe 1 or 2 questions you are not able to answer. Fine, there are 12. Even if you are able to answer 6, something will come. You see, it's not convergent thinking. It is not convergent thinking. It is divergent thinking. Convergent thinking is, if I ask you, who is responsible for the formula E is equal to mc square? You will say Einstein. Convergent thinking. You converged and you filtered out everything. You boiled it down to that answer that I was looking for. Divergent thinking is, I am saying, you take the word doubt and you go broad. Let your mind expand out and find me wherever there are keywords to be found. And in order to help you expand out from the word doubt, which is divergent thinking, I ask these 12 questions. Do you understand what I'm doing here? Are you following me? Do you realize what's going on? It took me a long time to extract these techniques, but they are all extracted now and they've been put. Achha, by the way, there was no AI used. ये सारी के सारी टेक्निक्स तब बनी थी, AI वगैरह कुछ नहीं था, ये खुद बनाई गई हैं और ये सारी की सारी चीटों में डाली हुई है. बिट हार्ड तो ये बिट हार्ड ही है भाई. ये गेम इज नॉट फॉर एवरीबॉडी. थोड़ी सी डिफिकल्टी तो होगी ना. यूपीएससी है. वी आर टॉकिंग अबाउट डाउट एंड द मैन ऑफ साइंस. और हम कोई ह्यूमैनिटीज के, सोशल साइंस के, इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट्स तो है नहीं जिन्होंने ये सब कुछ पढ़ा हुआ है, जिनके पास ऑलरेडी कंटेंट है लिखने के लिए. हम तो यूपीएससी एस्पिरेंट्स हैं और हम निकालेंगे इसको. ऐसे ही निकलेगा ये, और कैसे निकलेगा ये एग्जाम? और तरीका क्या है बताओ? और कोई तरीका है नहीं. धीरे धीरे इंटेलेक्चुअल लेवल बढ़ेगा. धीरे धीरे इंटेलेक्चुअल लेवल बढ़ेगा. ऐसे सोचना सीखोगे, आपके पास कंटेंट आएगा, आपको कोजिटो एर्गो सम भी पता चल जाएगा कुछ देर में क्या होता है. पर मेरा काम है वो ट्रांसफर करना. और सिर्फ ट्रांसफर नहीं करना है ना, आई नीड टू गिव यू द फ्रेमवर्क. मुझे तो एक्सरसाइज सिखानी पड़ेगी आपको, ताकि आप बार बार करते रहो. उसके बाद बिफोर यू नो इट, बिफोर यू हैव डन इट फॉर 10 or 20 such essays, so much content will have come out. You don't need anything else, do you? मैंने आपको स्टार्टिंग में ये भी बोला था, आपको नहीं जरूरत पड़नी चाहिए to read any extra content, any extra academic content. This is one small trailer, you might say, which sort of proves the point. Agreed? Should I go ahead? Move ahead? Cheat book is included in this program in Nirnay IAS. I think you should be able to get it. हालांकि इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, मुझे पता नहीं कि MSP में है नहीं है. Frankly, please forgive me for that. But even if it is not there, cheat book के 2 versions थे. Version 1, version 2. Version 1 is available as a PDF download. I have distributed it many times. Version 2 is not available, but कोई बात नहीं, उससे नहीं फर्क पड़ेगा. आपको वर्जन 1 PDF मिल जाएगा. इट इज सर्कुलेटिंग एवरीवेयर. कभी किसी टेलीग्राम ग्रुप में कहीं ना कहीं हमेशा घूमता रहता है वो. एंड इट हैज बीन डिस्ट्रीब्यूटेड आउट ऑफ माय ओन डिजायर. इट इज नॉट पायरेटेड. आई हैव सेंट इट आउट. चीट बुक 2 हैज नॉट बीन गिवन आउट, बट कोई बात नहीं. उसमें
because you are in this course, I will teach everything, so you don't have to, okay. This stuff is in cheat book 1. This stuff is very much in cheat book 1, not an issue. I'm moving on. Do you realize that I would have done the exact same thing for the second word? For the second word, which is science, I did it for doubt. I would have done the exact same thing for science. I would have started asking the same questions about science. I would have asked what are the ethical debates about science. I would have asked question number 10. Take a look at question number 10. I would have ultimately asked you this. Can you think of an Indian example? You would have told me Chandrayaan. You would have told me the astronaut that is in the news these days. You would have told me a lot of things. You would have told me about the air defense system, blah, blah, blah. Point is, आपके पास इतना कंटेंट ऑलरेडी है कि आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं है. ये टेक्निक समझ में आई आपको? ओवरऑल हाउ इट वर्क्स आएंगे हम इस पे when we are writing essays in depth. Today we are taking a tour है. ठीक है, आगे बढ़ूं. Now deconstruction हो गई, structured brainstorming